ओए पता नहीं क्यों मुझे अब तक लग रहा था कि 98 चैप्टर्स है इसमें, लेकिन इसमें केवल 95 चैप्टर्स हैं। मैंने अब भी देखा। तो स्टील बॉल रन की जर्नी जब मैंने सोचा था उससे पहले ही खत्म हो जाएगी। ये आखिरी चैप्टर, इसमें सब कुछ हो जाएगा। वैसे सेंस बनाता है क्योंकि स्टील बॉल रन जो रेस है वो कंक्लूड हो चुकी है। तो इसमें सब कुछ होगा, सब कौन जीता कौन हारा क्या कैसे रहा, फिर जो भी बात का वो होता है ना कि होने के बाद क्या हुआ, दूसरे कैरेक्टर्स का इधर उधर, जैरो के पापा क्या सोचेंगे टाइप चीजें, सब इसी में होंगी। द वर्ल्ड ऑफ स्टार्स एंड स्ट्राइप आउटरो। All you need to do is lock it. The shelter has an elevator that will descend only once when it is locked. It cannot be unlocked. The corpse is stored deep below the earth's surface. So even if enemies that wish to destroy it appear, it would take them 80 years. All of the good fortune in this world will begin with you. जॉनी, जायरो, वैलेंटाइन और ये लूसी, डियो फिर अपना सवार दो घोड़े। अच्छा ये दिखा रहे हैं कि क्या हुआ, घोड़े गिर के जॉनी एकदम अनरेवल हो रहा है बुरी तरह से अपने इन्फिनिट रोटेशन की वजह से। माई ओन इन्फिनिट रोटेशन, इट्स ओवर। देर इज नो लॉन्गर एनीथिंग आई कैन डू ऑन दिस ब्रिज एट दिस प्लेस। इट्स ऑल ओवर। आई ब्रेक डाउन इन टू बिट्स ऑफ डस्ट एंड डिसअपियर समवेयर आई लॉस्ट, and I don't think even a soul will be left behind. Within the cops being here in New York City, sorry, with the cops being here in New York, Tio, you will become the center of the world. Just spin the dials with your fingers and it will be locked. All right, President, I believe you. वो डायल स्पिन करने वाला था पर अचानक से लूसी आ गई। तो लूसी ने डियो को रोक दिया। डियो रुक क्यों गया? डियो कर दे काम भाई। यार मुझे विलन्स पे भी गुस्सा आता है जब विलन्स ऐसी बकचोदी करते हैं। और इसने लूसी को गर्दन से ऊपर पकड़ लिया द वर्ल्ड को यूज करके। लूसी स्टील, what are you doing? What's this? You came here alone? It doesn't look like that man. Steel is outside. Why have you come? एक सेकेंड। हाँ हाँ हाँ। अच्छा हाँ 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 वैसा नहीं, वैसा वाला शायद। फॉर हैप्पीनेस, इट वॉज फॉर हैप्पीनेस दैट आई क्रॉस दिस कॉन्टिनेंट एंड केम हियर। क्या ये इसको किस करने लगी? आई सी। Stephen Steele already knows about the construction of this shelter and about the existence of the corpse. He knows too much. Obviously, I cannot leave him alive. Once everything is over, I will have to shut Steele's mouth. But Lucy, you are just so young and cute. What shall I do with you? It may seem like you will never get your happiness, but I came in case Johnny couldn't take the corpse back from you. I came here. I have been waiting at this Gold Point church since early this morning for your arrival. The corpse is not yours. Is that right? No matter how cute a voice you say it in, it's useless, Lucy. Right now, because of certain circumstances, one of my legs is wounded and it hurts so much. If you think that this technique of seduction will incite sympathy in me, then just wait until my leg is treated, and we can play all we want. I'll make you fall to the lowest a woman can go, and then while I'm playing with you, I'll kill you. Sorry, I'll kill you. Sorry guys. Sorry, मेरी गलती। मैंने लास्ट के 2-3 चैप्टर एक ही गो में एक ही बारी में पढ़े हैं, ताकि ताकि क्या, कुछ नहीं भाई, मुझे बहुत इंटरेस्ट था तो शायद मेरा मुंह थक रहा है। तो कुछ हुआ इधर इसके घुटने पे, नहीं ये कपड़े पे डियो का ग्लव है। और ये क्या उसने छोड़ दिया? व्हाट इज दिस बंडल? इट्स नॉट एग्जैक्टली अ प्रेजेंट, मोर लाइक समथिंग यू लॉस्ट। व्हाट लूसी, प्लीज स्टॉप, व्हाट आर यू इंटेंडिंग टू डू? आई एम श्योर इट शुड बी अराउंड हियर, इट वाजंट दैट फार ऑफ। At this rate, Johnny and Dio should reach Manhattan and get to the goal tomorrow morning. If we go there now by train, we'll be able to overtake the racers and get there first. Before then, we have to find that. If we find that and then head forward. Please, Lucy, stop. Throw away the blade. Why do you need to, something so repulsive in order to find happiness? If Johnny is defeated and fails, we are sure to be killed too. If the same two things that meet, they'll be annihilated.
I heard President Valentine say that when I was on the train. समझ आया क्या कर रही है? ये डियो का सर ले जा रही है. Something that came from another world and something in this world. If two of the same objects meet. तो उसने देखा कि असल में क्या था अंदर और डियो देख के चौंक गया कि उसका खुद का सर था अंदर. The world, get away, stop trying, stop time. एक सेकेंड. तो उसने टाइम रोका. वो बैग किधर गया? मुझे बैग नहीं दिख रहा. उसने बैग छोड़ा? क्या किया? Say get away, the world, far away, this is bad. I've got to get away from here, far away. और उसका पैर भी नहीं है, वो तो लंगड़ा लंगड़ा के जा रहा है. My leg, how dare you, how dare someone like you, Lucy Steele? Who do you think I am? Doing something like this to me. The victor is I, Dio. Stop. I am at the pinnacle of the world. Stop this. You are just a shallow scum of a little girl. और इसने उसको हाउ डेयर यू डू समथिंग लाइक दिस टू मी, आई वोंट लेट यू लिव. और इसने लूसी को मारने वाला था पर इसका हेड इसके बगल में आ गया और दोनों की आंखें मिल गई और दोनों फटने लगे और ये द वर्ल्ड का भी निकल के फट गया स्कल और द वर्ल्ड गया काम से और लूसी ने बचा लिया खुद को. एक सेकेंड, ये स्टॉप्ड टाइम में गया. इसने डियो ने कहा स्टॉप टाइम किया था? इसने इधर द वर्ल्ड किया, फिर ये चढ़ के ऊपर जाने लगा, फिर इसको लूसी से बदला लेना था, लूसी को मारने आया पर फिर उसका सर उससे लड़ गया. तो स्टॉप्ड टाइम के अंदर कैसे लड़ा? आ, आ, क्या हुआ? यहाँ पे कौन है? इट्स मी जॉनी, ग्रैब ऑन. You may have been disqualified for the steel ball run race, but if you ride on this horse for a moment, you'll have a chance, won't you? और उसको पकड़ के ले गया और वो पूरा घूमे जा रहा है. The rotation will be a reverse rotation using the horse's power and infinite rotation on myself. तो इसने खुद को मारा और गिर गया और ठीक हो गया क्या? और कॉप्स सील अवे नहीं हुआ. डियो मर चुका है. सेलिब्रेशंस चल रहे हैं. हाउ आई वॉज लिटरली एबल टू स्टार्ट वॉकिंग अगेन. दिस इज अ स्टोरी ऑफ रिवाइवल. हाउ आई वॉज लिटरली एबल टू स्टार्ट वॉकिंग अगेन. And thinking back, I was constantly playing the whole journey. Even this cross continental race by horse was a journey of prayer. Praying for the weather tomorrow. Praying that when we wake up the next day, there would be a road on the land. Praying that we would have food and a place to sleep. Praying that our campfire would light. And while these common things would repeat. Prayer that my friend and the horses would be okay. And we crossed each river one by one. Now I have crossed the final river. As for the steel ball run transcontinental race, in the end there were 39 contestants to complete it. Poco Loco ended up as the winner by default and obtained $60 million. The special prize for the final stage went to Sloop John B, a prize of $10 million. The horse that matched Diego Brando's registered no sprint Silver Bullet was discovered on the side of the road. And because the contestant himself could not be found, Diego Brando was disqualified without apology. People all over the world waited for United States President Valentine to arrive to give speech for the closing ceremony, but with the explanation being security reasons, the mayor of New York made a speech in his place. The president did not appear. However, the people's praise of the President Valentine would never stop. According to a newspaper report, the approval rating for the president rose to 91%. देखो कुछ भी कहो, बंदा पेट्रियोटिक तो था, उसने सब कुछ अपने देश के लिए किया ना. तो क्या पता वो इतना ज्यादा प्योर था कि कॉप्स मतलब कॉप्स भी उसकी साइड लेने लगा. तो क्या पता कि ये ठीक ही अच्छी बात है कि ये लोग सब उसको प्रेजेस कर रहे हैं. एंड इट वाज अनाउंस्ड दैट द हेड ऑफ एवरी नेशन sent distinctions to him. Because of the many resulting dead, criticisms that the race was inhumane came from all sides. It was announced that the economic result of the race was $70 trillion. Huh? And it was also announced that the promoter, Mr. Stephen Steele, donated everything he earned to various different causes. And all of the criticism stopped immediately. The final results of the steel ball run race are shown below. सबसे पहले पोको लोको 60 मिलियन फ्रॉम यूएसए. फिर नोरिसुके हिगाशिकटा बाय अ नेक. फिर स्लूप जॉन बी
ओके, थर्ड प्लेस आया उसका ओवरऑल, लेकिन क्योंकि वो स्टेज जीता तो उसको 10 मिलियन मिले और 50,000 ऐसे ही कुछ मिल गए। ठीक है। जॉर्जी पॉर्जी, और उसको 25,000 मिले, नेलीविल को 12,000। एंड सो आफ्टर स्पैनिंग 4 months द कर्टन फेल ऑन द स्टील बॉल रन रेस. What the president wanted, the right thing to being fortunate, the right to being fortunate, even if the law of the napkin is within the corpse. I think that after all, the only thing that can decide what is the will of God. Ultimately, the corpse does not belong to anyone, not to be the possession of one nation or one person. This way is the best. The corpse must be stored somewhere, but this way it will not belong to anyone. Dio has locked this shelter shut, but Dio has been annihilated. This way is fine. It no longer belongs to anyone. I was afraid the one who owned it when it was locked would be given the napkin, but Dio was not disqualified to be the owner, as it would seem. Qualified. Huh. Dio was not, sorry, disqualified कहा. Dio was not qualified to be the owner, as it would seem. Qualified. और वो अपने हाथ को देख रही है. Yes, it was locked. The corpse has been stored deep within the earth. ओह, तो इसने लॉक कर दिया और स्टीफन स्टील को बताया भी नहीं. नाइस. और इस डॉग पे ये बंदा देख रहा है जॉनी जोस्टार को. ड्रैग ड्रैग. इट्स यू. आर यू डूइंग वेल? व्हाट आर यू डूइंग ऑन अ बोट लाइक दिस बोट इज गोइंग टू यूरोप, राइट? What am I doing? My original job was the customs officer. The official in the steel ball run race were hired on temporary basis. By the way, Mr. Johnny Joestar, what's the crate that you have with you? A corpse. It's the corpse of my friend and my friend's beloved horse Valkyrie. I am going back to his homeland on this boat and handing them over to his family. Fine, the horse is fine, but according to the boarding rules, I cannot permit you to bring a corpse on board. I'm sincerely sorry, but I'll have to ask you to have him cremated and bring only the ashes or have him buried in this country. I see. Then let me tell you a nice solution for that. You go get me authorization to bring him on board. I'm definitely going to bring my friend back to his native country no matter what. If you want a bribe, I'll pay you. Come here, everyone. Everyone gather around right over here. Get this crate off here by brute force. Get him. और ये क्या स्पिन होने लगी? What are you trying to do? I told you there's no way I'm taking this off the board. It's already impossible. Nyoho. Nyoho. Guess you have got no choice but to bug off. And if necessary, you go get authorization. Got it? We don't have any problem here, right? और ये नोरिसुके के साथ आया और सांस ले रहा है, तो नोरिसुके भी इसके साथ जा रहा है. Hey, look, Sandman is running. Awesome. First, the most dangerous one is the favorite to win, Mountain Tim. You still can't let them drink here. The horses have to last 3 days without drinking. That brat, I'll never forgive him. Those guys are the Boom Boom family creepy, aren't they? What the hell's that? Is it alive? How many times have we taken this path? That guy knows. He's part of the Royal Guard, Vikapipo. Johnny, this is lesson 4. Why don't we pray that we have a safe voyage, crossing the Atlantic Ocean and getting you back home? Let's go home. Several years later, on the other side of the Atlantic, the kingdom of Navplis had a revolution and the monarchy had been abolished, and it became a republic's dependent province. And for as for Boye, who had been imprisoned with a death sentence along with the abolishment of the monarchy, he was given amnesty and set free. He would later die of cold. Uh, I heard that the Zeppeli family, who were patrimonially employed as the official royal executioners of the kingdom of Naples, had moved to a different country, but no one knows exactly. JoJo's Bizarre Adventure Part 7 Steel Ball Run the end. Some final words from the team. It's all done. Steel Ball Run has been a long running process for our team. It started in October of 2014 with a single chapter. Our volume, one volume was done by 2015.
तो अच्छा, इन्होंने तब से करके ये सब कर रहे होंगे ना। फाइनल वर्ड्स फ्रॉम द टीम कॉन्ट, पता नहीं, म्यूजिक एज हल्ड्रा टोनियो। तुम सब पॉज करके पढ़ लेना अगर पढ़ना है, ठीक है। मैं सबको नहीं यहाँ पे स्टिक अराउंड करूंगा, मैं तो पढ़ूंगा। पर ये इट अपियर्स दैट यहाँ पे स्टील बॉल रन खत्म हो चुका है। हाँ यार, अजीब सा लग रहा है ये एंडिंग, मुझे सेटिस्फाइंग नहीं लगी। मतलब कुछ और तो दिखानी थी चीजें, कि जैसे जायरो के पापा ने क्या कहा कि जॉनी को भी स्पिन आता है, ये तो फैमिली रूल्स के खिलाफ है। या उसकी बहन विकापिपो की बहन, या मतलब कुछ भी वो एंडिंग नहीं मिली मुझे। एनीवे, स्टोरी बहुत फैंटास्टिक थी मेरे को। मैं जब भी पढ़ता था ना सारा दिन, जैसे कुछ कुछ चैप्टर ही पढ़ता था एक दिन, जैसे एक दिन एक या दो ही चैप्टर, तो सब का सब मेरे दिमाग में रहता था कि मेरा पूरा दिन यही सोचते हुए जाता था कि इस स्टोरी में क्या चल रहा है, आगे क्या होगा। ऐसी चीजें मुझे बहुत पसंद है। एनीवे, ये सीरीज खत्म हो चुकी है, चैप्टर 95 तक ही था। 98 मुझे पता नहीं क्यों लगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, और कोई मेरी सीरीज देखनी हो मांगा कवरिंग की तो देख लेना। ठीक है, बाय।